Well, this was some chase by Islamabad United. I mean, you look at the score that we saw today, 200 plus runs were chased. And at one point, it seemed like Karachi Kings were in a dominating position. But things completely changed when Azam Khan came into bat for Islamabad United. We saw that innings by him in Karachi. But this one might be right up there, considering it was in a chase, it was in a winning cause in front of a packed house in Pindi. So congratulations to Islamabad United, and because we're talking about Azam Khan, we have him here, right here next to us in the studio. Azam joins us alongside Sana Mir. Azam, क्या करते हैं आप? मतलब आपने बॉलर्स को डरा दिया है, नजर आ रहा था कि उनको एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रही थी कि आपको कहाँ बॉलिंग कराएं। नहीं ज़ैनब, देखिए मेरा हमेशा से यही एक रोल है कि मैं हमेशा टीम के जो बेस्ट बॉलर्स होते हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज उनके स्ट्राइक बॉलर एल से तबरेज़ शम्सी थे, बिकॉज ही वाज बॉलिंग सो वेल इन द प्रीवियस गेम, सो आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई कैन टेक हिम डाउन, और आज वो हुआ, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एक सवाल मेरा भी आजम से, जब शोएब मलिक बॉलिंग कर रहे थे और वो ज़्यादा यॉर्कर्स पे जा रहे थे, हमने देखा ऑफ स्पिन पे आपका 170 का स्ट्राइक रेट है, पर आपने टाइम लिया, तो वो क्या गेम प्लान था आपका? वो गेम प्लान काफ़ी सिंपल था, क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि जब भी हम डीप लेके जाते हैं अपनी टीम को, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करते हैं। तो हमारी कोशिश यही थी इस दफ़ा, मेरी और फ़हीम की, बिकॉज ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर, तो आपको पता है कि जगहें स्विच करनी पड़ती, तो टीमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं इससे। तो हमारी कोशिश यही थी कि जितना लंबे से लंबा खेलें उतना टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, स्पिनर्स को वेरी एविडेंटली आप बहुत अच्छा खेलते हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू प्रेफर योरसेल्फ, मतलब पेस या स्पिन, तो व्हाट डू यू एंजॉय बैटिंग अगेंस्ट? क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देखिए लास्ट ईयर 2022 में आई वाज़न्ट दैट ग्रेट ऑन पेस, बट दिस ईयर लाइक आई हैव एन एवरेज ऑफ 40 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 155। तो मैं हमेशा अपने स्टैट्स देखता हूँ और मैं उससे हमेशा भी मुतमईन नहीं होता, तो कोशिश इम्प्रूवमेंट की होती है। और इस साल काफ़ी फास्ट बॉलर्स पे गेम चेंज किया है, काफ़ी मेहनत की है उस पर, और वो बाकी रिजल्ट आप लोग के सामने। लेकिन आई वुड प्रेफर प्लेइंग स्पिन मोर, बिकॉज आई नो आई कैन बी मोर डोमिनेंट ऑन स्पिन। बट इसमें क्या है, मतलब यू रीड देम रियली वेल फ्रॉम द, यू पिक देम अप फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड, या क्या चीज़ है जो आपको इजी लगती है या कन्वीनियंट लगती है? बेसिकली द की इज़ टू वॉच द बॉल नॉट द बॉलर। तो जब आप विकेट कीपिंग करते हो तो आपको पिच का काफ़ी आइडिया हो जाता है, और आपको फील्ड प्लेसिंग का भी आइडिया हो जाता है, जिससे आपको पता है कि बॉलर कहाँ पे बॉल कर सकता है। सो थोड़ा प्री प्लान भी होता है और थोड़ा आपको सोच समझ के भी खेलना पड़ता है। लेकिन इन दी एंड आज मुझे अपने गेम पे काफ़ी भरोसा था, क्योंकि थोड़ी बाउंड्री मेरे ख्याल से इस तरफ की थोड़ी छोटी थी, सो विद द स्पिन आई वाज प्लेइंग दैट दो स्ट्रोक्स, और व्हिच एंडेड अप going out for boundaries. सना, इन्होंने कराची में भी एक ऐसी इनिंग्स खेली थी which was जिसे कहते हैं ना quite a display, जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेली। बट आज का मैच जो था, it was a tough one in the sense कि 200 प्लस रन चेज कर रहे थे, they were down three wickets down as well when he came in। तो इस लिहाज को, कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए, I mean, how do you rate his knock? I think मेरे ख्याल से इनका हो सकता है पसंदीदा नॉक हो जाए। मैं तो जब आई हूँ ग्राउंड में, मेरी आजम से बात हुई तो मैं उसी नॉक की बात कही थी। मैंने कहा मैंने बड़ा एंजॉय किया टीवी पे देख के। तो आज अच्छी बात यह है कि लाइव भी हमने इस तरह की हिटिंग देखी। और चेज़ में हमेशा जब विकेट्स गिरी होती हैं और 200 रन रगा होता है बोर्ड पे, तो इस तरह की इनिंग्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि जो शुरू में फ़हीम की इनिंग्स थी, जो पार्टनरशिप थी, बल्क ऑफ द रन आजम ने बनाए हैं, और सारा जो अटैक बॉलर्स पे लिया है वो आजम ने लिया है। तो ये इसलिए बहुत ज़बरदस्त थी। और उससे अच्छी बात ये कि इन्होंने मैच को फिनिश किया है, किसी और पे छोड़ के नहीं आए। अच्छा, आपको अगर कंपेयर करें वो कराची वाली इनिंग्स से, आई नो कि ये पूछा गया, बट डू यू प्रेफर दैट इनिंग्स टू दिस वन, या? आई थिंक कराची इनिंग वुड बी माई फेवरेट, बिकॉज वो मैंने बहुत ही कम बॉलर पे बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला था, विदाउट गिविंग एनी चांसेस टू द फील्डर्स। तो आई थिंक दैट वुड बी माई वन ऑफ द career best innings, but I'll rate this one also because ये भी chanceless रही है, और जो मैं चाह रहा था शॉट खेलना वो मुझसे लग रहा था, तो ये भी काफ़ी हाई रेट करूँगा। Chanceless, he's saying he called his innings chanceless, and chanceless it was actually flawless, and जिस तरह की उन्होंने shots खेली all along the ground, really was entertaining for all the fans that were here in Pindi. So we're talking about Azam Khan. He's also our master blaster for today. And the most impressive thing about Azam Khan was his wrist work and the power. He was able to open up the leg side, going on one leg, on his knee, and creating that length for himself, and then using the wrist to open the blade of the bat
onto the offside. So this has been a brilliant innings because he was able to finish the match for his side. अच्छा, पिछले मैच में वो आपका स्वीप 6 था जो कि बहुत वायरल हुआ एंड एवरीबॉडी एंजॉयड दैट शॉट. तो आज के मैच में कोई थी ऐसी पर्टिकुलर शॉट दैट सॉर्ट ऑफ ट्राई की थी, पैरों में ही खा रहा था. ट्राई वही कर रहे थे. लेकिन वो शॉट ऐसा है कि काफ़ी प्रैक्टिस की उसके पीछे. मैं जब भी एकेडमी में खेलता हूँ अपनी, तो रेंज हिटिंग की मैं बताता रहा हूँ कि ज़्यादा रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे आपको पता है कि T20 अब इतनी फास्ट हो गई है कि यू नीड टू स्कोर बाउंड्रीज इन द मिडल, स्पेशली जो 6 से लेकर 15 ओवर है. इफ़ यू डोमिनेट द टीम्स ओवर देयर इन दोस आई थिंक 8-9 overs, then you have the game in your hands. एक और चीज बताएं, एक जो स्किल लेवल तो हमने आपका देखा ही है, बट इट सीम्स लाइक यू डोंट टेक एनी प्रेशर. आई मीन जिस किस्म की हम ये शॉट्स देख रहे हैं, जो मैच की जो भी सिचुएशन हो, आप लगता है ऐसे है कि जिस तरह बहुत ठंडे दिमाग के साथ आते हैं. और अब एब्सोल्युटली. और ये जो शॉट आखिरी दिखाया है, ये बेचारा बॉलर एज ए स्पिनर ना बड़ा दिल दुखता है बॉलर के लिए, क्योंकि बॉल बुरा नहीं था, इन्होंने क्रिएट किया है वो लेंथ. देखिए, आप T20 में आपको पता है कि हमेशा से आपको नई इनोवेशन लानी चाहिए और नए शॉट्स क्रिएट करने चाहिए. खुद ते बॉलर्स उससे ना बैकफुट पे चले जाते हैं, बिकॉज स्पिनर्स के बाद 2 से 3 डिलीवरीज होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा. तो उस पर अगर आप डोमिनेट कर दें तो फिर वो ऑलरेडी बैकफुट पे हो जाते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से गेम चला सकते हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड का माहौल जो है वो बहुत ही चिल माहौल है, जैसे कहना दैट्स द वर्ड फॉर इट, बिकॉज़ चिल माहौल ही है. बिकॉज सना हम भी जब जाते हैं पहले मैच से पहले, व्हेन यू आर जस्ट हैविंग अ चैट विद एवरीबॉडी एंड कैचिंग अप, तो हर कोई लगता है कि बहुत भाई जहाँ पे ज़ुखरफ हो, हसन चीमा हो, अली नूर हो, वहाँ पे रेहान हो, तो चिल माहौल ही हो. आजम खान हो, बिल्कुल अपनी गिटार भी बजाते हैं, गाना भी गाते हैं. आज के लिए कोई है एक आध लाइन गा देंगे जो आज के मैच के लिए कोई एक ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एक लाइन तो गा दो. आज इतना अच्छा परफॉर्म किया है. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. ये लाइन भी वैसे बड़ी एप्ट है सना आज के लिए. अब तो आदत सी है मुझको. नहीं, बस ये लोग इस पे मुझे ज्यादा वो ना करें कि ये क्या बातें कर रहे हैं. वो तो आपको पता है पाकिस्तान का, लेकिन इट्स जस्ट फन, दैट्स ऑल. आज तो जायज है जी, आज तो जायज है. आपको पता है प्लेयर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से, और जितना वो अपनी भूख रखेगा रन्स बनाने की, तो उतना उसको आगे फ्यूचर में. चले, आपने जाना है, बट जाते हुए मुझे ये बताया कि जाएगा, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आज का दिन है 3 मार्च 2023, कि आजम आपका क्या गोल है, where do you want to see yourself, let's say in the next 2 years or whatever, तो क्या सोचें, क्या जवाब देंगे? I'll say goal is very simple, and the goal is to live in the present moment. और present moment जब आपका अच्छा होगा and you will think about the present moment, तो हर चीज़ आपके अंदर आ जाएगी. पाकिस्तान टीम? Definitely, why not? Why not? पाकिस्तान टीम सुन रहे हैं, सारे सिलेक्टर्स भी सुन रहे हैं, सारा कुछ देख भी रहे हैं, एंड आपका सोशल मीडिया भी तो है, वो भी लगा हुआ है कि आजम खान को होना चाहिए टीम में. नहीं, खैर है, देखें, ये अल्लाह ताला इतनी परफॉर्मेंसेस करा रहे हैं तो खुशी होती है. और लाइक आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट दैट आई एम फिट. आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर you will see me working hard on myself. Inshallah. Well, you've got a great head above your shoulders. That's the most important thing that we've seen with Azam as well, apart from the fact that he entertains everybody. He's also very mature and sensible in what he says. But thank you so much. Thank you so much. हम आपको जाने देंगे, and thank you, आपने हमारे लिए एक लाइन भी गाई जो कि नॉर्मली पैसे दो. मेरे पास तो नहीं है सना, तुम ही दे दो उसको. भाई अब इनको प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिल गई है, आपकी टीम जीत गई, 2 पॉइंट्स मिल गए, और क्या चाहिए? बस ऊपर वाला चला रहा है. पैसा आ जाएगा. इसी तरह जो चलते लिखा है नसीब में वो आएगा. इसी तरह चलते रहोगे तो आ जाएगा. आजकल हमारे स्टूडियो पे लोग बहुत सेंसिबल बातें करना चाहोगे. उस दिन रोमान रवैसी भी आए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, एंड he was also making a lot of sense. So it's great to have such people in the studio. But on that note, we'll take a short break. Thank you so much, Azam, and all the best for your remaining games. We'll take a short break and we'll be back just in a bit.
आजम खान अभी हमारे शो पे मौजूद थे एंड यू नो सो मच फन टू हैव हिम. गाते भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छे होते हैं. अब तो आदत सी, मेरी तो बहुत ही बुरी बेसुरी आवाज है, मैं नहीं कर सकती. बाजत भाई बड़ा अच्छा गाते हैं. मैं नहीं कर सकती, मैं पहले से कह रही हूँ. बट ही सैंग अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, बाजिद. और क्या आपको लगता है कि लोगों को भी अब आदत हो गई है आजम खान की इस तरह परफॉर्म करने में? कराची की एक आपने इनिंग्स देखी होगी, उसके बाद ये तो एक और ही लेवल पे थी. बिल्कुल. मुझे जो मोस्ट इम्प्रेसिव इस इनिंग्स के लिए कि बैटिंग स्किल तो हमें सब पता है कितना अच्छा वो खेलता है, बट अगर आप उसको देखें अंडर सो मच प्रेशर, मतलब यू आर चेसिंग 200, ही कम्स इन, पोजीशन इतनी कोई अच्छी नहीं है और लग ऐसे रहा है कि स्पिनर्स शायद अच्छी बॉलिंग करें, बट थ्रू आउट दैट इनिंग्स कभी आपको एक दफ़ा नहीं लगा कि वो घबराया या उसके मुंह पे या शक्ल पे प्रेशर नज़र आया. अब ज़ाहिर है अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो फ़ौरन लोग कहने लग जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन इधर जो बनता है वो प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स इन वाइट बॉल क्रिकेट इज़ MS धोनी. MS धोनी का भी कभी नहीं लगता था कि 10 की एवरेज चाहिए या 15 की एवरेज चाहिए, मैच हमारे हाथ से निकल गया है. आज वो फील ऐसे आ रही थी आजम खान से कि 2 छक्के चाहिए, 3 छक्के चाहिए, टेंशन नहीं है. वाकई कोई टेंशन नहीं लग रही थी सना, ना उनकी शक्ल पे लग रही थी ना टीम की शक्ल पे लग रही थी. जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल वो जैसे ना चिल में थे सब. बिल्कुल. जैसे आपने उनसे उनकी गोल को पूछा कि नेक्स्ट गोल क्या है, उस पर भी उनका जवाब जो था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. और आई थिंक ये हम सब के लिए एक एस्पायरेशन है. जब हम लोग कर सकते हैं इस स्टेट को अचीव, आई थिंक यू परफॉर्म बेटर. और आई थिंक वही उनका माइंडसेट बैटिंग में भी था कि वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को उस बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे. और आई थिंक वो उनके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद टीम के लिए बहुत काम कर रहे हैं. और ये चेस जो है, दिस पार्टनरशिप आल्सो वर्कड वंडरफुली फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड चेजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप्स. तो आइए देखते हैं आज का स्टार अटैक. Well, this is the third joint highest successful run chase in the history of HPL PSL. 202 Islamabad opposition Karachi is 2023 में पहले भी ये हो चुका हुआ है. And Islamabad, I'm not surprised actually, because if there's any team that is that you'd back in terms of chasing, बाज़त अगर कोई एक टीम नजर आती है कि जो बड़े टारगेट्स चेस कर सकती है, इस्लामाबाद के पास वो बैटिंग है. और आज नजर भी आया कि एक तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस है एंड फिर रिकॉर्ड्स भी बना रहे. हाँ, सरप्राइजिंग बात ये थी कि आज से पहले इन्होंने कभी 200 चेस नहीं किया हुआ था. दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि जिस तरह की इनकी बैटिंग है आप सोचेंगे कि यही वो टीम है जो हमेशा चेस कर जाएगी. ज़ाहिर है बैटिंग बहुत अच्छी है, ज़ाहिर है हमें पता है कि कितने पावर हिटर्स हैं उनके पास, लेकिन एक जो कंसर्न हमेशा रहता है उनकी बॉलिंग से है. तो गोइंग फॉरवर्ड क्रंच टाइम पे इनको इनकी बॉलिंग को भी किसी सिचुएशन पे स्टैंड अप करना पड़ेगा, वरना आई डोंट थिंक कि पूरा टूर्नामेंट ये जिसे पिछले भी सालों में हमने यही देखा है कि दे बैक देयर बैटिंग डू वेल, बट समहाउ इन द पास्ट फ्यू इयर्स दे हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश. आई थिंक देयर इज अ स्लाइट कंसर्न ऑन दैट बॉलिंग यूनिट, और फॉर देम टू विन द टूर्नामेंट आई थिंक वन मेजर गेम और वन बिग गेम उनकी बॉलिंग को जिताना पड़ेगा. दैट इज़ अ गुड पॉइंट इंडीड, बिकॉज बाकी अगर टीम्स को देखें तो लाहौर कलंदर्स हैं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है. मुल्तान सुल्तान्स के पास भी बॉलर्स हैं. सो दैट इज़ द वन एरिया वेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड कैन इम्प्रूव. लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि चेजिंग में दे आर क्वाइट सॉलिड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव सीन टुडे एंड जनरली एज वेल. सो दैट वाज द स्टार अटैक फॉर यू. Well, we've been talking about Azam Khan and how good he's been, how entertaining he's been. We've witnessed some clean striking from him, which is why he's also our player of the match today. An innings of 72 runs of just 41 deliveries. He took his time initially against Shoaib Malik, but then he attacked one of the best batters. One of the best bowlers. He played it on the leg side and the offside.
he was just here in the studio, Bazid, and he was saying कि I was asking him, do you prefer playing spin or pace? नजर आता है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं. And he actually said कि उन्होंने अपनी पेस गेम पे काम किया है in the last 1 year, and नजर भी आ रहा है because स्पिनर्स का तो चलो एक obvious सी बात थी, but have you आपने भी कोई ऐसा नोटिस किया डिफरेंस उनकी गेम में? He's मतलब on the crease is much stiller than he used to be. मतलब even when he's facing pace लगता है ऐसे कि बड़ा stable base है, composed है at the crease. ज़ाहिर है काम तो ज़रूर किया होगा, लेकिन पाकिस्तान में आफ्टर हफीज़ एंड शुएब मलिक एक थोड़ा सा गैप था कि स्पिनर्स को कौन अच्छा खेलता है, स्पेशली स्पिनर्स को अटैक कौन अच्छा खेलता है, अटैक कौन कर सकता है. आई थिंक आजम खान फिट्स द बिल. आई थिंक इससे अच्छा इस वक्त पाकिस्तान में स्पिनर्स कोई नहीं खेल रहा. एब्सोल्युटली. जिस तरह से हमने आज देखा था तबरेज शमसी को उन्होंने अटैक किया, एंड इवन सेड in his interview that he likes to target the best bowlers in the opposition, and that tells you about his mindset as well, you know, the way he plays. So kudos to him. But we're talking about the switched on moment for today. So aaj ka jo switched on moment hai, it's that partnership, that breakthrough partnership. 125 runs ki ye partnership hui between Fahim Ashraf and Azam Khan, and it features in our switched on moments for the day. Yeah, I think Azam ने ही इस partnership को build किया, and he's very good against spin. As we know, he can hit it out of the ground, leg side, off side, and then Fahim in the end was an able partner. पार में जाके runs बनाए हैं. अच्छा, ये फहीम अशरफ को भेजना आज पहले भेजना, you know, do you think that was a master stroke by शादाब खान कि उनको आज पहले भेज दिया? टू बी ऑनेस्ट शुरू में आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि क्यों भेजा, क्योंकि शुरू में जिस वक्त पार्टनरशिप बन रही थी तो बहुत ही साइलेंट पार्टनर नज़र आ रहे थे और बहुत ही आउट ऑफ द स्किन आजम को खेलना पड़ा, जो कि वो खेल सकते हैं और सलाहियत है, जिसकी वजह से फ़हीम की शुरू की इनिंग्स में आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन बहुत देर में उनकी पहली बाउंड्री आई. तो आई थिंक देखना पड़ेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि शादाब बहुत आउटस्टैंडिंग इस नंबर पर खेलते रहे. बट आई थिंक सिर्फ इमाद वसीम को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इमाद वसीम ने सिर्फ 2 ही ओवर्स कराए, एक लेफ्ट हैंडर को भेजा गया, विच वर्कड आउट वेल फॉर देम. काफ़ी प्लान्ड, ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन थी. इस्लामाबाद यूनाइटेड हर चीज़ जो है वो दिमाग से करते हैं, उनका हैशटैग भी जो है दिमाग से है, सो उनकी सारी स्ट्रैटेजीज जो है इट इज़ अकॉर्डिंग टू हु इज़ फेसिंग होम. बट ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. It's always a pleasure having you in our studio today as well, and we'll be now taking a break, and when we do come back from the break, we'll be joined by a new guest. What a terrific performance then by Islamabad United, led all the way by Azam Khan. We had him earlier on the show, and he's as entertaining to talk to as he is on the field. We've got another person sitting next to me who's equally entertaining. He's quite the predictor, Nostradamus, as I like to call him. His predictions, not really sure if they went right today, Wilco. No, they didn't. They're poor today. I think I probably rushed into that. I think I needed a couple of early pre-show chats with my learned friend Bazil Khan. No, I got that wrong, but I think that Karachi tonight were Shazammed. Shazammed. I like that word. Shocked by Azam. Shocked See? by So Azam, Shazammed is the new word. So yeah, he was the difference. Otherwise, I think Karachi were going to win that tonight. Yeah, you're talking about him being the difference. How good was he? That's as good an innings as I've seen in recent times, because I can't remember a false shot. If there was one, it was when they bowled short at him and he tried to, you know, to try to put it somewhere. But I think he just works out where he's strong. He's strong here. He got off the mark with a couple of fantastic sixes here. Where do you bowl to him? As a bowler, you look at the area where you can bowl at him, it's about that small. If you had to get a Yorker in, it's about that. That's it. That's all you've got to aim at with someone like Azam Khan. So it's very, very difficult, because the ball doesn't swing after about 3 overs.
It was pretty obvious that he was making the bowlers nervous as well. Azam Khan, with the kind of batting that he was doing, it was almost intimidating. But talking about being nervous, I think the Karachi Kings fans are also going to be nervous after looking at this points table. You know, 8 matches that they've played, they've now lost 6 of the games that they've played. It's been a year which is, you know, pretty much a replica of last year for them. They didn't win many games last year, and this year again, you know, it's been rather disappointing. Islamabad United, they've won 4 of the games. They would rather be pleased with this win today. Well, Mohammad Amir and Wasim Akram, there's lots for them to ponder, lots for them to contemplate. The one thing that I've always wondered about Mohammad Amir is the fact that as a left-arm bowler, yes, when the ball doesn't swing and when it doesn't come back into the right, like if it doesn't come into Azam Khan and he's pushing it across like that, Azam Khan knows that he's not going to get an LBW. So I just wonder why Mohammad Amir doesn't come round the wicket. He's talking to one of the greats there in Wasim Akram. Why he doesn't come round the wicket and just stop that angle, stop that width. And it's just something that I've always thought about Mohammad Amir, why he doesn't do that. And maybe Wasim Akram will have a word with him, try it for the next game. But I think a worry now for Karachi is the fact you saw Mohammad Amir limping there. That knee, that front knee is obviously giving him some problems. Yeah, he has just come back from a groin injury. He's pretty much still struggling. That's what he was talking about. But I think the side overall, Karachi Kings, is struggling, especially when it comes to their bowling. Their batting wasn't too bad today. Imad Wasim scored some brilliant runs, and he's been performing for them. But perhaps it's been a solo show when it comes to Karachi Kings. And because we're talking about them, let's have a look at their fall of wickets. Yeah, this was good delivery, just came back in. Alan laughs as the left armer gets a wicket. Then the short ball skidded on too quickly to Tayyib Tahir. And a slow one which was picked up at mid-on. And when Shoaib Malik got bowled, it seems as if Karachi Kings would just fold. But it was a fantastic innings from Imad Wasim. This was spectacular. This was absolutely sensational. Van der Dusen with the catch. Yeah, caught Van der Dusen. He's in the column. It's been a solo show, like I said, from Karachi Kings. You know, if you look at their performance, only Imad Wasim is the one who's really stood up when it comes to bowling, either in the power play or, you know, scoring some runs like we saw from him today. But the others really haven't contributed. Well, their side doesn't look as if it's got the right balance. You've got Imad at 5. You've had Ben Cutting batting at 6. They look a top-order batter short. I'm not sure whether Buzzard agrees. They look a top-order batter short. When you look at Islamabad United, you've got Asif Ali coming in at 6, 7. If Shadab Khan didn't bat tonight, look at the strength of their batting. So I just think that they're a batter short, and their bowling tonight, as Imad said to you straight after the game, he said, look, I was happy with 200, but we can't defend it. It was difficult. You had that Azam factor, but they still look as if their composition of Karachi Kings is not right. Yeah, Imad Wasim has actually touched upon that, you know, in a lot of the games, the bowlers have let them down. When you look at Karachi Kings, it's not really been a team effort from them. But we're talking about Karachi Kings, we're talking about their fast bowlers. Mohammad Amir features in our fastest delivery of the day. Well, these are the top paciest deliveries of the day. Mohammad Amir seems to have upped his pace in the last few games, definitely getting a bit of this rhythm back, and saw that in the previous game with that ball to Babar. Well, you talk about Mohammad Amir, Baz. I mean, you know, he bowled really well in that game against Peshawar Zalmi, getting that huge
big wicket of Babar Azam. And even today, I mean, overall though, when you look at Karachi Kings bowling, it has been a letdown in the tournament. Yeah, absolutely. I thought at first they weren't playing Shamsi, which was quite extraordinary for me to understand that you've got #1 spinner in the world in T20 cricket, you don't play him. And on those pitches, I think Karachi was much more suitable for the induction of wrist spin. Yes, you look at that lineup. Obviously, they've not got results. Obviously, they're not performing. But if you look at that lineup as a T20 squad and you look at players and you look at the combination and think, this is not going to hurt us. This is not a side that's going to hurt us. You don't have the firepower in the bat, even in the low order, except for Imad Wasim, who's had an exceptional tournament. He's had the best tournament with the bat he's ever had, but his side has not won. So you look at those 4, 5, 6, and you look at a power hitter. Is there someone who can change the game? No. Is there someone like an Asif Ali? No. Is there someone like an Azam? Is there anybody in that middle order who will actually get you 12 and over consistently for 5, 6 overs? You struggle. Well, we're talking about things that can change the game. And there's one thing that can change the game. It is taking good catches. That definitely changes the game. And we saw an absolute screamer by Hassan Ali. It's also in our safe hands for the day. As good as it gets. It really is as good as it gets. This Hassan Ali with the awareness not to touch those boundary cushions, and there is Rasif van der Dussen just collecting the post, and he just falls into his lap. But the hard work, the agility, the acrobatic dive, and this awareness not to touch those boundary cushions, to flick it back, that is brilliant. And it should be Hassan Ali's name in the scorecard, not Rasif van der Dussen. And I must say, our camera lads did well there to get that. It's brilliant. Absolutely, that's just a great moment. I think the reaction by the bowler pretty much tells you a story that, you know, it was just such a brilliant catch. Never easy out there in the deep, and it was certainly a fine effort by Hassan Ali. On that note, we'll take another breather and catch you guys just in a bit. Back on the Pitchside Show, and what a visual treat for all the fans here in Rawalpindi. I'll tell you what, Rawalpindi has been magnificent when it comes to coming out and really supporting their respective sides in the HPL PSL. Definitely today was no different to what we saw in the previous game. It's time to hear from the fans what they have to say about today's encounter. इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इस्लामाबाद की टीम फेवरेट टीम है, इसलिए शादाब की वजह से और आज़म खान की वजह से। आज़म खान ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है। आज़म खान एक ऐसा प्लेयर है जो कि सिंगल बंदा पूरे मैच को जिता सकता है। उसने जब वो टीम में आया था तब बहुत प्रेशर था टीम पे, मगर उसने आके जो छक्के मारे उससे सारा प्रेशर ख़त्म हो गया और उल्टा दूसरी टीमों पे प्रेशर पड़ गया। मैच हम देखने आए थे कराची किंग्स के लिए, काफ़ी फेवरेट टीम है हमारी, लेकिन कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे। 2020 के बाद फर्स्ट टाइम हमारी टीम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड पे खेल रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत इंजॉय किया हमने। जब आज़म खान वो एक फूड पांडा है, आज़म खान इज आल्सो कॉल्ड एज अ फूड पांडा। आज़म खान जैसे बंदों के लिए तो फील्डर होने सारे स्टैंड्स में चाहिए। उनके छक्के तो ग्राउंड से हमेशा बाहर ही जाते हैं और आसमान में बॉल नजर आती है। नहीं, डेफिनेटली आज़म खान कॉन्फिडेंट, इतना बड़ा प्लेयर है और स्पेशली वो हिटर है, तो मुझे यही था कि अगर 3-4 ओवर खड़े रहेंगे तो मैच को फिनिश कर देंगे, तो उन्होंने वही किया जो जिस काम के लिए वो माहिर हैं। But clearly, a lot of Azam Khan fans out there who got a chance to see that special knock by Azam Khan today. He played that knock in Karachi.
But I think that this one was perhaps even better than that one. Okay, it's time for some Masalaydar moments. We've got this special one, Tayyab Tahir. Tayyab Tahir's wicket, that short delivery to him features in our Masalaydar moments for today. Yeah, it was a short pitch delivery and all over the place. Tayyab Tahir, Tom Curran. Tayyab Tahir was looking good actually till then, and we've seen that innings by him in that previous game, but the send-off by Tom Curran tells you a story, what this meant to him. Right, Karachi Kings, it's been a disappointing HBL PSL for them so far. I mean, Baz, when you look at their campaign so far and what lies ahead for them, I'm just going to straight up ask you, are they out of the tournament? Look, in a way, it's good for them because the pressure's off. Nobody's now expecting them to win any games or expecting them to qualify in the top four. So that can free you up, can free all of those players up with no pressure and just try and enjoy their cricket and come back into the tournament that way. It's been tough for them. It's been really tough. I don't think that from the onset they had their combinations right, and that's sort of stuck with them throughout. I still think, obviously, it's such a long tournament, and we that pressure, the fear of failure in these final few games, and actually play to their potential because they've been always under the pump and they've succumbed to that. I just feel that they've got 2 games left now. 2 games left. In 2 previous seasons, sides who've won 4 games have qualified for the top 4. So mathematically, there's a chance for Karachi Kings. I don't think I agree with Baz. They've got to get the combination right, but I think they're still in there. Pressure's off. Go out there and play, express yourselves, win the 2 matches, and see what happens. Yeah, we need that, nothing to lose attitude from Karachi Kings. That's what we need to see. Thank you so much, Baz and Berko, for your presence on the pitch side. But remember that the HBL PSL carries on tomorrow as well. We're taking time off in Pindi, but Lahore is pretty much set because they've got the home side who played really well. They are the table toppers, and they played so well in that match against Quetta in the previous game. And they are up against Multan Sultans in match 20, live at 7 p.m. from Gaddafi Stadium, Lahore. Well, great game today. Islamabad United fans are going to be extremely happy. The fans in Rawalpindi really enjoyed themselves. We really enjoyed ourselves watching Azam Khan hit it to all sides of the park here in Pindi Cricket Stadium. But we'll be seeing you guys probably day after. But of course, there is a match tomorrow as well. But until next time, it's goodbye from all of us. We'll leave you with some super moments. जितना भी हो मैच नहीं कर पाएगा दिखा दे दिन में तारे किसी से कम नहीं प्यारे हर गेम को उठा दे नेक्स्ट लेवल देखेगा पूरा